hope that you all are doing well, you all are safe at home, my dear kids. My name is Ms. Rashmi Chaudhary and today we are going to start with English. The book that we are going to follow today is Let's Learn English, okay? And today we have something very new, a topic like one and many and animals and their babies. Yes, animals and their babies तो हमने पढ़ा है पहले भी, right? हमने animals और उनके young ones को क्या कहते हैं ये सब पहले भी पढ़ा है. And today we are again going to see, yes हमने EVS and GK में पढ़ा है ना ये. And one and many also we are going to study, okay? One means क्या होता है? Only one, मतलब सिर्फ एक. And many मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा. Suppose I have one pen, ठीक है? ये एक मार्कर है ना, ये सिर्फ one है. And suppose ये मेरे पास दो चीजें हैं, तो ये क्या हुआ? ये many, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ one है, नहीं one से ज़्यादा है ना, दो चीजें हैं, तो ये आ जाएगा many में, ठीक है? तो one मतलब क्या होता है? सिर्फ एक. That is called singular, ठीक है? And many मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर दो या तीन या चार, उसको क्या कहेंगे? Many. I have many things in my hand. तो वो many वाला कौन सी पार्ट में आ जाता है? Plural में, okay? If सिर्फ one, if there is only one, then we say it's singular. And if there is more than one, जहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं, तो we call it plural, okay? That means one means only singular and many means plural. One means singular and many means plural, okay? So now how we will differentiate it between like one and many? हाँ, हम pictures देखें तो we can say that yeah, this is many, this is one dog and that is many dogs. There is one dog, there are many dogs. There is one copy and there are many copies. हम picture को देख के तो बोल सकते हैं, but writing में हम how we will do in a writing part? Yes, that's what I'm gonna teach you today, ठीक है? Suppose if there is only one dog, then how we will write? D-O-G, dog लिखते हैं ना हम, ऐसे करके लिखते हैं. Now, if there are many dogs, मतलब वहाँ पे अगर एक से भी ज़्यादा dog है, then we will add their S at the end of the words. मतलब कि हम नाम के पीछे S लगा देते हैं. If we are adding S at the end of the word, that means there are many things, okay? As I told you that during picture, when we see a picture, yeah, we can differentiate it that there is only one thing, that is there is only singular and where means जहाँ पे ज़्यादा होता है, yes we can say there are many things, but while writing we face a problem, right? And what we will do if there is only one thing, जहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे हम नाम लिखते हैं, we write just a name. And if there are many dogs, suppose वहाँ पे बहुत सारे dog हैं, then what we will do? We will add their S. कहाँ पे S add करेंगे? Words के पीछे S को add करेंगे. If we are adding here S, that means there are many things. And remember that one means singular. We say it's singular. And if there are more than one thing, there are many things. That means that is plural. Okay. So these all are the plural words that I have written here. Okay. So first of all, I have written here D-O-G-S, dogs. In each word you can see that I have added S in each word, right? That means वहाँ पे ज़्यादा चीजें हैं. So let's open to page number 56. Now you can see, look at the pictures and read below. There is only one apple, so S नहीं लगाया है. And there in the right, excuse me, there in the right side there are many apples, so वहाँ पे S लिखा गया है. A-P-P-L-E-S, apples. Like one car, many cars. One cat, many cats. One pencil, many pencils. One rose, many roses. And one boy, many boys. Okay, सारे नाम के पीछे S लगे हैं ना? कौन से वाले पिक्चर में S लगे? जहाँ पे बहुत सारे चीजें many है, right? Okay. Now page number 57. Here you have to trace it. वहाँ पे कुछ pictures है and dots है ना? तो there what you have to do? You have to dots में you have to trace over there, ठीक है? There are dog, then dogs, kite, kites, pen, pens, rat, rats, mat, mats. Okay. Now in page number 58, there you have to write change from singular to plural. Write the name of one object to its many by adding S to its name.
G dog, right? तो जब इस चीज को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे then the word it will be spelling क्या होगा? D-O-G-S dogs. Yes, spelling तो dog का यही रहेगा but we will add their S to show that it is plural. ठीक है? To show that there is many dogs. Okay? Second is bat and the answer will be B-A-T-S bats. Third ball B-A-L-L-S balls. Fourth girl answer will be G-I-R-L-S girls. In this way you have to do. Okay? This question shows us that we have changed the singular word to plural. Singular से हमने plural में convert किया. How? By adding S in each word. Okay? So this one and page number 59. Okay. Page number 59. Again the same thing. Here also you have to write the names of the picture. Okay? जैसे कि bird का बन गया birds. Book picture के सामने book लिखा हुआ है ना, like spelling लिखा हुआ है. You just have to add their S and you have to write this words in this way. Okay? Like birds, then books, then chairs, then tables, then boys, rings and stars in this way. Now chapter 23, 56 to 59. This is your homework. Now let's move on to chapter number 30. That is animal and their babies. Okay? The page number is 72. Let's open it. If you open the page 72, then it's animal and their babies. Okay? We have already learned this in our EVS class, right? जो animals होते हैं and their young ones. ठीक है? जैसे आप लोग छोटे-छोटे बच्चे हो ना अपने पेरेंट्स को, वैसे ही सारे animals के भी छोटे-छोटे babies होते हैं. Excuse me. Like cat का baby क्या होगा? Kitten. The young one of dog is called puppy. Hen, sheep, cow, calf, horse, foal, duck, duckling, lion, calf, sheep, lamb, goat, kid, pig, piglet, deer, fawn and kangaroo, joey. Okay? So these are the young ones of the animals. Now, what you have to do, you have to learn the names. You don't need to learn the spellings. You can just learn the names of their babies. Okay? Now, if you turn the page to page number 74, there you have to look at the picture and you have to write the name of mother animal as well as their young ones. Okay? आपको mother animal का भी नाम लिखना है and उनके young ones का भी नाम लिखना है. Okay? So first one is sheep. The mother animal is sheep and the young one of sheep is lamb. Mother animal second pig. The young one of pig is called piglet. Third is duck and the young one of duck is called duckling. Okay? Fourth one is hen. The hen is a mother animal and the young one of hen is sheep. Next is cow. Cow, the young one of cow is calf. Horse, foal, kangaroo, joey and deer, fawn. Okay? In this way you have to write the name of mother animals and their babies. And in the last page, that is page number 75, here help the mother animal find her baby. यहाँ पे क्या करना है? Left side में you will see that there are only the mother animals and in the right side there are the babies. You have to write the names first and then you have to match it. Suppose first one shows us the mother animal, that is cat. Now the baby of cat is called kitten. So kitten आपको ढूंढना है picture में, then you have to write the name of a kitten, spelling of a kitten and then you have to match it. Okay? So page number 72 to 75 and 56 to 59. You have to learn and you have to do the exercise part also. Okay? That's all. Okay dear students, we have finished up with English. Now we will be doing maths and the book that we are going to follow is Easy Learning Maths and let's count 1 to 100. Okay? So we have already completed till numbers name from 1 to 10. So today we will be doing page number 71 and 72, that is the numbers name from 11 to 15. Okay? So first of all I will write here the spelling of 11, that is E-L-E-V-E-N, 11. The next is 12, T-W-E-L-V-E, 12. And next is 13, that is T-H-I-R-T-E-E-N, 13. Then next is 14, F-O-U-R, 4, T-E-E-N, 14. 15, F-I
In page number 71 you will trace it and learn the spellings, okay? And in page number 72 there is count and write the numbers name, use the help box. You have to count the object and then you have to write the spellings of those numbers, okay? Like for example, first one is van. So let's count. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 14 vans, okay? So there you will write the spelling of 14. That is F-O-U-R-T-E-E-N, 14. Next is truck. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are total 11 trucks, okay? So there you will write the spelling of 11. That is E-L-E-V-E-N, 11. Next is rickshaw. Count the object and then you will write the spelling of that object. Next also the same thing. And in the second question, draw lines to match the number with its number name. Now here, the numbers are given in the left side and in the right side, the spellings of those numbers are given. Now you have to match it with the number name. Means you have to match the numbers with their number name, like 11. 11, it is, the number is written in the left side and you have to find out the spelling of 11, then you will match it, okay? So in this way you will complete easy learning maths, that is page 71 and 72. And for let's count 1 to 100, okay, that is page number 132. So let's open the page. 132, it's the division part. Here you will write the numbers from 1 to 50, okay? आपको 1 से लेके 50 तक numbers वहाँ पे column दिया गया है. You have to write the numbers over there. And the next page number, that is 133. Here you have to fill in the blanks from 1 to 50. First of all, you will write the numbers starting from 1 to 50. Then in the next column you will write the backward counting. Backward counting I have already taught you that how you have to write. Backward counting means आपको last से लिखना है, okay? तो यहाँ पे आपको 50 से start करना होगा. 50 से लेके आप end करोगे 1 तक, ठीक है? एक line, one line I'll show you. 50, then comes 49, then 48, 47, 46, 45, 44, 43 and etc. You have to write the numbers. आप 50 से शुरू करोगे and end करोगे आप 1 पे, ठीक है? 1 पे आपको end करना है. जैसे कि I have explained you in the previous class that backward counting 10 से लेके 1 तक मैंने सिखाया. तो rest आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे. Then from page number 135, it's after and before. Color the picture before the butterfly green and after the butterfly orange in each row, okay? Before and after I have already taught you. Before मतलब पहले, after मतलब बाद में. Now यहाँ पे जो butterflies दिख रहे हैं ना, butterflies के जो after आते हैं उसको आपको green color करना है and जो the butterfly green and after the butterfly orange in each row, okay? Sorry, before butterfly के जो before में आ रहे हैं जितने भी pictures उसको आप green color करोगे and जितने भी after आ रहे हैं butterfly के उसको आप orange color करोगे, okay? And in 136, that is follow the direction given in each row. Circle the dog on the left. Here the instruction has been given that you have to, like in the first one, circle the dog on the left. Left side में जो dog है उसको आप circle करो. Second, circle the cat on the right. Right side में जो cat दिख रहा है आपको, that circle it. Third one, circle the rat on the right. Right side में जो picture है उसको circle करो, okay? And rest you will do it by yourself. Now in page number 47, that is last, write what comes after and what comes before. Here, for example, after मतलब क्या? I also told you that follow this, okay? अगर ये number के पीछे है, that means you have to write the after number. और अगर ये number के आगे है, that means you have to write the before numbers. So 3 के बाद में क्या आता है? After में 4. Okay? Now one example from before, that is number 5 is given. Now you have to write the number that comes just before 5, that is 4. Okay? ये हमने बहुत सारे classes में कर दिया है. I hope that you have all understood clearly. So this is the homework you have to do, that is, let's count from this, pause the video, note down, let's learn easy learning English, that is page 71 and 72. That's all for maths. Okay dear students, now we will be doing EVS and GK, and the book that we are going to follow is General
57. Here is about the food. In the previous class also we have learned something about food, है ना? So now today we are going to learn hot food and cold food. Hot मतलब गरम खाना and cold मतलब ठंडा खाना. Okay? There are some food that we eat hot and also there are some food that we eat cold. Okay? Now these are the food items which are eaten hot. Okay? जैसे गरम गरम खाना अगर हमें मिलता है तो वो यम्मी लगता है, right? Now वही गरम खाना अगर ठंडा हो जाता है तो we don't like it ना, मतलब खाते तो हैं but usually we don't like it, right? So the food that are eaten hot is soup. सूप भी हमें गरम गरम पीना ही पसंद है, right? And चपाती तो ठंडा होने पर वो फिर सॉफ्टनेस चला जाता है. And next is rice. Rice we eat cold also, but it is the food that is eaten as hot. Okay? Then dal also we eat hot. Then cooked vegetables and tea, right? तो ये सब क्या चीज़ है? Hot food है that are eaten hot. Now cold food. Cold food में usually क्या आता है? Like desserts वगैरह या फिर आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स ही आते हैं. Okay, the food that are eaten cold are ice cream, then milkshake, then lemonade, okay, and curd. Yes, curd also we eat cold. Okay, so these were the foods that were eaten hot. These are the foods that we have learned that which foods are eaten as hot and cold. This thing do you know very well. Now in page number 58, that is sweet and salty food. Sweet food मतलब मीठा खाना like dessert, example cake वगैरह, and salty food जो नमकीन खाना होता है. Okay, these food items that are sweet in taste. Now the food items that are sweet in taste are like ice cream, cake, bananas, chocolate, honey, बर्फी, right? There are many foods that are sweet in taste. Sweet मतलब होता है मीठा खाना. Okay, and salty tasted food are like soup, popcorn, dal, poha, chapati, noodles. Okay, salty food means नमकीन वाला खाना जिसमें salt यूज होता है, and sweet food means मीठा खाना. Okay, जहाँ पे sugar यूज होता है. Now in page number 59, that is let's do color the box yellow for sweet food. वहाँ आपको ये सारे foods में से जो sweet food होते हैं उसके box को yellow color करने हैं, and blue for salty food. You have to color the box blue which are salty food. Okay. Now ice cream and pastry are sweet food, so you will color it with yellow. And chapati is there is chapati. Okay, that is salty, so we will color it with blue color. Okay, blue color से आप इसको color करोगे. चपाती salty तो नहीं होता, but sometimes we add salt. Okay, there. So next question is color the box red for food items eaten hot and yellow for food items eaten cold. जो खाना हम hot food होता है ना उसको red color करना है and cold food को yellow color करना है. Okay, so noodles and rice are eaten hot, so we will color it with red, and cold drink is eaten drink cold only. Cold drink को हम cold में ही ठंडा करके ही पीते हैं, right? फ्रिज में रख के. So you have to color that with yellow. Okay, so this is your homework and rest you will learn the words. Okay, practice करो, revise करो, and doing part is page number 59. So that's all for general awareness. तो बच्चों हमने इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस खत्म कर दिया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी. बुक हम लोग भाषा सेतु से पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर है ये, पेज नंबर 25 एंड 26 आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने आ की मात्रा पढ़ा, छोटी की मात्रा पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा. ठीक है, छोटी की मात्रा कैसा होता है, इस साइड से होता है ना, इस साइड से होता है छोटी की मात्रा. अब बड़ी की मात्रा कहाँ साइड से होता है, ठीक इस साइड से घूमता है. ठीक है, छोटी की मात्रा इस साइड से घूमती है एंड बड़ी की मात्रा यहाँ साइड से घूमता है. ठीक है, तो बड़ी की मात्रा से बने शब्द का, बड़ी की मात्रा जहाँ पे प्रयोग किया गया है उन शब्दों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि झील, तीर, रीच. ठीक है, इसका साउंड कैसा होता है, मतलब ई हम लॉन्ग होता है जैसे झील. फिर छोटी की मात्रा के वर्ड्स कैसे थे, जैसे कि दिन, बिन, किन, ऐसा ना. और बड़ी की मात्रा को हम लंबा खींचते हैं इसके स्वर को, जैसे कि झील, फिर तीर, फिर छीर, फिर रीच. ओके, ऐसे तरीके से लाइक झ में बड़ी ई ल, झील. ठीक है, नेक्स्ट होगा त में बड़ी ई र, तीर. फिर है रीच, र में बड़ी ई छ, रीच. ठीक है,
जैसे कि हम छोटी ई की मात्रा को भी ऐसे बोलते हैं ना कि ये अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी है, वैसे ही बड़ी ई की मात्रा में भी झ में बड़ी ई लगी है ना, तो हम क्या बोलेंगे, झ में बड़ी ई लचीर, र में बड़ी ई छरीज। अब ये मात्रा यहाँ पे तो नहीं लगा है ना, यहाँ र में लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, र में बड़ी ई छरीज, फिर त में बड़ी ई रती। वैसे ही कुछ कुछ लंबे वर्ड्स जैसे कि त में बड़ी ई स, र में बड़ी ई तीसरी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ और भी सेंटेंस है, वाक्य है, जैसे कि घी का दीपक जला, फिर दिवाली। हमने क्या सीखा कि जो बड़ी ई की मात्रा जब लगती है उसका स्वर को हम लंबा खींचते हैं, लेकिन छोटी ई की मात्रा का स्वर को हम लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। उसको बस हम प्रोनाउंस करते हैं, स्वर को मतलब छोटे तरीके से बोलते हैं। तो पेज नंबर 26 में क्या है, शब्द को उसके चित्र से मिलाओ। एज यूजुअल हमने ये पहले वाले क्लास में भी करा है, ठीक है। तो फर्स्ट है घड़ी, घड़ी ये है ना, घ और ड़ में बड़ी ई घड़ी, तो आपको ये वाला घड़ी का चित्र के साथ इस वर्ड को मैच करना है, ठीक है। ये हम बहुत सारे क्लासेस में करते आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है रंगीन रेखा पर बड़ी ई की मात्रा लगाओ, फिर शब्द को पढ़ो और लिखो। अब जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन में ये लिखा है ब फिर च, ठीक है, ऐसा लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, तो आपको इसमें बड़ी ई लगाना है, और जब ये शब्द बनेंगे तो दूसरा मार्जिन में आपको लिखना होगा ये पूरा वर्ड, ठीक है, ऐसे करके ब में बड़ी ई ज बीज, ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस को आप करोगे, फिर पढ़ो और अंतर समझो। सेम थिंग, आपको इसका किस अक्षर का प्रयोग हुआ है आपको वो देखना है, जैसे कि फर्स्ट खिल खिल, मतलब छोटी ई की मात्रा का डिफरेंस है, फर्स्ट में छोटी ई है, फिर सेकेंड वाले वर्ड में बड़ी ई, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सुलेख लिखो। यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग लिखना है, मछली जल की रानी थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मछली, म छ ल में बड़ी मछली, जल जल की रानी, र में आपका न में बड़ी रानी, थ में बड़ी ई थी, रानी थी। आपको इसको अच्छी तरीके से लिखना होगा। कहाँ पे लिखोगे, इसके ठीक सामने में लिखोगे, ठीक है, पेज नंबर 26 को। अब पेज नंबर 25 आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, और पेज नंबर 26 का एक्सरसाइज है, वहाँ पे कुछ सेंटेंस वाक्य भी दिया गया है, पढ़ोगे भी और लिखोगे भी। तो बच्चों